हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनु लॉ क्लासेस। फ्रेंड्स, आज के हम वीडियो में मार्च 21, 2022 का डेली हिंदू न्यूज़ एनालिसिस करेंगे। बट बिफोर वी मूव टुवर्ड्स एनालिसिस, आई वांट टू say two important news for today. That is, today is International Day for the Elimination of Racial Discrimination. I repeat, today is the International Day for the Elimination of Racial Discrimination. That is 21st March. Now, this day is celebrated on 21st March to commemorate the Sharpeville massacre. Okay, Sharpeville massacre. ये Sharpeville massacre क्या था? So as we know that earlier in South Africa there was apartheid government, जिसका मतलब होता है that there is a racial discrimination, racial segregation between black and white. Now during this 21st March, people they came out with a non-violent protest against the apartheid government, and police opened fire, which killed many people. So this day since 1966 is celebrated as International Day for the Elimination of Racial Discrimination. The theme for 2022 is Voices for Action Against Racism. Voices for Action Against Racism. The next is, today is also the International Day for Forest, which is celebrated since 2012, and the theme for it is Forest and Sustainable Production and Consumption. Now friends, let's move to the important news. The first news is about the Covishield. That is, now earlier the Covishield, the difference between the first dose and second dose was around 12 to 16 weeks. Now अब उसको घटा के 8 से 16 वीक के बीच में कर दिया गया है। इसका मतलब कि कोविशील्ड सेकेंड डोज विल बी 8 वीक्स आफ्टर द फर्स्ट डोज। नाउ अगर हम इसको कोवैक्सीन से कंपेयर करें, सो कोवैक्सीन का जो दो गैप होता है बिटवीन टू डोजेस, इट इज़ अराउंड 28 डेज। फ्रेंड्स, अर्लियर भी हमने न्यूज़ पढ़ा था अबाउट द नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन विच रिकमेंडेड द वैक्सीनेशन ऑफ 12 to 14 years एज ग्रुप, और इनको जो वैक्सीन लगेगा दैट विल बी कोर्बेवैक्स। दैट विल बी कोर्बेवैक्स मैन्युफैक्चर्ड बाय बायोलॉजिकल ई। नाउ कोवैक्सीन, इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय भारत बायोटेक, एंड कोविशील्ड इज मैन्युफैक्चर्ड बाय सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। अर्लियर ऑल्सो लास्ट वीक हमने एक न्यूज़ देखा था रिलेटेड टू वैक्सीन ओनली, दैट यूरोपियन यूनियन इज कंसिडरिंग गिविंग अ वेवर टू इंडिया एंड साउथ अफ्रीका फॉर प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन। तो अर्लियर क्या था कि साउथ अफ्रीका एंड इंडिया दे वर डिमांडिंग ट्रिप्स वेवर, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ट्रिप्स वेवर फॉर प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन। नाउ यूरोपियन यूनियन हैज कंसिडर्ड गिविंग वेवर टू दिस टू कंट्रीज सो दैट दे कैन मैन्युफैक्चर द वैक्सीन्स, फॉरेन मेड वैक्सीन्स इन देयर ओन कंट्री. Now the second news is about Sun Pharma's expansion project near Tamil Nadu Bird Sanctuary set to get green nod. Now friends, जैसे कि हम जानते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट जो होता है, तो जब कोई भी प्रोजेक्ट होता है, जो भी अपकमिंग प्रोजेक्ट है दैट इज कॉल्ड एज ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट, इफ दे आर कमिंग इन अ एरिया विच इज़ ग्रीन इन नेचर, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, तो उनको अप्रूवल लेनी पड़ती है। एक कमिटी है एनवायरमेंट मिनिस्ट्री का, दैट कमिटी इज कॉल्ड एज expert appraisal committee. Now over here the issue is that Sun Pharmaceutical Industries expansion project is coming in Tamil Nadu's Madhuvantakam Taluk. Now it is around 3.7 किलोमीटर फ्रॉम अ बर्ड सेंचुरी जिसका नाम है वेदनथंगल बर्ड सेंचुरी। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि वेयर इज वेदनथंगल बर्ड सेंचुरी, सो इट इज इन तमिलनाडु। नाउ since it is very near to Vedanthangal Bird Sanctuary, so it is important for this industry to take approval from Expert Appraisal Committee. So now Expert Appraisal Committee of Environment Ministry has given green signal, मतलब okay कर दिया है. Now this project can come here. Now there is one rider, एक clause है इस green node को, that this green node means this green signal will be subject to the judgment in a case against the company which is already pending at the National Green Tribunal. Okay. The next news is that already elections have been concluded in 5 states. They are Manipur, Punjab, then Goa,
उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे मणिपुर को लेके और गोवा को लेके और उत्तराखंड को भी लेके इश्यूज हैं अबाउट हु विल बी द सीएम। सो फ्रॉम आवर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू द न्यूज इज दैट हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर आफ्टर द state legislative general election. So it is N Biren Singh. So N Biren Singh, the full name is Nokthombon Biren Singh. He will be the chief minister of Manipur for a second time. Now one more information about this information that N Biren Singh is going to be second such chief minister after Okram Ibobi, who was of the Congress party, to serve the state for this consecutive 5-year term. Now friends, this is the news related to cheetah. So cheetah is extinct in India. So we don't have cheetah in India. The Asiatic cheetahs are extinct from India. These are the areas where cheetahs were found earlier. Okay, now cheetahs, they are considered as the apex predator. Okay, they are considered as the apex predator of desert ecosystem. Okay, या of dry land ecosystem. ठीक है, जो ड्राई लैंड इकोसिस्टम होता है जिसका जो एपेक्स प्रेडेटर होता है वो चीता होता है. नाउ वंस द चीता वाज एक्सटिंक्ट फ्रॉम इंडिया, सो व्हाट हैज हैपेंड ओवर हियर इज दैट the government has introduced a plan to introduce Asiatic cheetah. Okay, Asiatic cheetah in India. तो यहाँ पे जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि ये एशियाटिक चीता कौन से नेशनल पार्क में इंट्रोड्यूस होने वाले हैं और वो नेशनल पार्क कहाँ पे है. सो दिस एशियाटिक चीता दे आर गोइंग टू बी इंट्रोड्यूस्ड इन कूनो नेशनल पार्क विच इज़ इन मध्य प्रदेश. Now, when was the last time the cheetah was sighted in India? So here is the answer. It is 1967 when the cheetah was last sighted in India. The next news is about Regional Comprehensive Economic Partnership RCEP. ये RCEP है एक वर्ल्ड का you can say largest trading deal है. And it includes 10 countries of ASEAN, that is Association of Southeast Asian Nations. Along with that, we have China, Japan, South Korea, Australia and New Zealand. Earlier, India was also part of this trade deal, but India opted out of RCEP in 2019 due to some trade related issues, particularly related to rules of origin. Now, rules of origin का मतलब होता है कि जो प्रोडक्ट है वो एग्जैक्टली कहाँ पे बना हुआ है उसके बारे में बताना. ठीक है. नाउ व्हाई इंडिया इज इंसिस्टिंग ऑन दैट रूल टू बी इंक्लूडेड हियर. द इंडिया इज इंसिस्टिंग बिकॉज सी चाइना इज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ RCEP, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, बट इंडिया हैज़ अ वेरी ह्यूज ट्रेड डेफिसिट विद चाइना. अगर हम इंडिया चाइना का ट्रेड रिलेशन देखें तो इंडिया चाइना का ट्रेड रिलेशन में इट इज़ फेवरेबल फॉर चाइना, इट इज़ फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड. मतलब चाइना एक्सपोर्ट ज़्यादा करता है, इम्पोर्ट कम करता है इंडिया से. बट अगर इंडिया के केस में देखें देन इट इज़ अनफेवरेबल. सो इट इज़ अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड. ओके. सो इंडिया ऑलवेज हैड दिस कंसर्न दैट चाइना मे यूज दिस RCEP टू डंप इट्स प्रोडक्ट इन इंडिया एंड इट माइट हार्म द डोमेस्टिक इंडस्ट्री इन इंडिया. ऑलरेडी द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन इंडिया इज़ वेरी वीक एंड इफ द डंपिंग स्टार्ट्स फ्रॉम चाइना then the manufacturing sector will suffer a huge loss and it may impact the employment prospect in India. That's why India opted out of RCEP. Now Japan hopes that India will join RCEP as its founding member. Now एक बार जब इंडिया 2019 में जब बाहर हो गया तो क्या RCEP कंक्लूड नहीं हुआ? नहीं, RCEP conclude हुआ and it became effective. It is being implemented from January 1 this year, January 1, 2022. Now friends, today Quad से related दो information है. एक तो ये है where the Australian envoy Barry O'Farrell has said that Quad has accepted Indian stand in Ukraine, where
India has abstained from voting against Russia in United Nations Security Council, United Nations General Assembly, and then United Nations Human Rights Council. Okay, now they understand that here India has a significant energy requirements, hence the move related to Russia is understandable by the Quad country. Now again, this is the news related with Quad, where China Deputy Foreign Minister has said that don't go down the NATO path. मतलब यहाँ पे क्या है, that China views Quad as something related to not NATO in Indo-Pacific. ओके जैसे कि नाटो का जो ईस्टवर्ड एक्सपेंशन हुआ था आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर एंड विच इज़ टुडे द क्रक्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया. सो ओवर हियर ऑल्सो चाइना इज सेइंग दैट क्वाड इज एज डेंजरस एज नाटो एक्सपेंशन इन यूरोप. तो अब क्वाड भी, चाइना क्वाड को भी एक नाटो इन इंडो पैसिफिक रीजन की तरह देखता है कि वेयर द 4 members of Quad, that is US, Japan, Australia and India, they have formed an alliance. But friends, if we see the nature of Quad, that is Quadrilateral Security Dialogue, there is a difference between Quad and NATO. NATO is a military alliance of 30 countries. Article 5 of NATO says that attack on one country will be considered as attack on all the 30 countries. But Quad, it is just a security dialogue. Here the dialogue takes place between these 4 countries and it is not a security or military alliance. Recently, Australia, UK and US, they announced a security alliance which is called as AUKUS. Okay, so AUKUS is a security alliance. Why it is called a security alliance? Why? Because under AUKUS, 8 nuclear powered submarines will be delivered to Australia. Now friends, this is the news which is important and is going to be important in coming days. A cyclone is coming in Andaman and Nicobar Island. That cyclone is called as Cyclone Asani. Okay, it is going to come in Bay of Bengal, and already evacuation is taking place here, and rescue effort is being taken by the National Disaster Response Force. Now Cyclone Asani, so it is Indian Meteorological Department which is a nodal agency for naming the cyclone in the Indian Ocean region. The next is India hopes to put down roots in Arctic. तो इंडिया इज गोइंग टू लॉन्च इट्स आर्कटिक प्रोग्राम, जैसे कि हमारा एंटार्क्टिक प्रोग्राम है. India already has an Antarctic program which was launched in 1981, and currently India has 2 stations in Antarctic, that is Maitri and Bharti. Okay, and 40th expedition to this Arctic program was launched recently by the Ministry of Earth Science, and this 2 stations are managed by National Center for Polar and Ocean Research in Goa. Now similarly, India is going to have its research station in Arctic region also, that will be named as Himadri. So India has a station which is called as Himadri. So Himadri याद रखना है, confusing type में आ सकता है. That Maitri and Bharti, they are in Antarctica. Okay, Antarctica is a continent, and then if Himadri comes, then Himadri is in Arctic. Okay, fine. तो ये हिमाद्री है, it is in Svalbard, which is a Norwegian archipelago. Archipelago का मतलब chain of island. Okay, now the next is what is Arctic Council. So Arctic Council, it consists of 8 nations which surrounds the Arctic region. This is Canada, Denmark, Finland, Norway, Iceland, Russia, Sweden and United States. They are the part of Arctic Council. Now what is the importance of Arctic region? It is home to about 4 million. Okay, it is home to about 4 million, and 10% of them are indigenous tribes. So one of the objective of Arctic Council is also to protect this indigenous tribes. Now India opened its base, that is Himadri, in Antarctic in 2008, and it has 2 observatories. Now Arctic region का जो पूरा covered by ice, it has significant influence on Indian monsoon. That's why
studying the Arctic region is going to help to predict the behavior of monsoon, which is very unpredictable. Okay, so one of the objective of this station is to study the Arctic weather, which influences the Indian monsoon, as well as what will be the impact of climate change and melting of ice caps in the Arctic region, and what impact it will have on India. These are also the mandate of India's Arctic program. Now currently जैसे कि हमने देखा कि आर्कटिक में अभी तक 40 एक्सपेडिशन भेजे जा चुके हैं एंटार्क्टिक में, तो आर्कटिक रीजन में कितने भेजे गए हैं अभी तक? तो आर्कटिक रीजन में 13 एक्सपेडिशन भेजे गए हैं सिंस 2007. नाउ what is the status of India in Arctic Council? That is the second question. So India has the status of observer member. Now friends, bad news from Mariupol. So Mariupol, it is a coastal city in southern Ukraine. It was surrounded by the Russian authority. यहाँ से evacuation को लेके बहुत ज़्यादा problem हो रहा था. Okay, and Russia was considering giving human corridor, but if you see that in Mariupol school, okay, 400 have been bombed. Now this paragraph is very important. Till now, how many people have been displaced because of Russia-Ukraine conflict? So it is 10 million people, which is 25% of Ukraine's population. Now again, let's come to Yemen. यहाँ पे जो लड़ाई है बहुत दिनों से चल रहा है, and it is between Houthi rebels which control the capital city of Sana'a, okay, versus government forces. ठीक है, अभी जो हाउथी रेबल्स है दे आर बैक्ड बाय ईरान, गवर्नमेंट फोर्सेस दे आर बैक्ड बाय सऊदी अरेबिया. ओके, तो सऊदी अरेबिया की जो लार्जेस्ट ऑयल फैसिलिटी है, इट इज़ कॉल्ड एज सऊदी अरामको. ओके, तो अब हाउथी रेबल्स ने क्या किया है, अरामको फैसिलिटी पे स्ट्राइक कर दिया है. ओके, सो वाई टू हैव एन टू गिव एन इकोनॉमिक कैजुअलिटी टू सऊदी अरेबिया. Now the next is which country is going to roll out fourth vaccine shot. तो पहले तो 2 शॉट थे वैक्सीन के, कोविड-19 के, फिर बूस्टर शॉट का बात हुआ, अब चौथा भी आ रहा है. तो इंग्लैंड इज गोइंग टू रोल आउट द फोर्थ कोरोना वायरस वैक्सीन फ्रॉम दिस वीक अकॉर्डिंग टू द नेशनल हेल्थ सर्विस ऑफ इंग्लैंड. So it will be the booster shot which will be made available to care home residents and people who are aged above 75 and those whose immunity is compromised, जिसको हम इंडिया में कोमॉर्बिडिटी बोलते हैं. Now friends, from sports section we have an important award that is called as 2022 Sports X Award. Okay, so if we will just see 2022 Sports X Award, so this award was presented by Baiju एंड IDFC. ठीक है, अब इनके इम्पॉर्टेंट अवार्डीज अगर हम देखेंगे तो द स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर इन मेल कैटेगरी हैज़ बीन अवॉर्डेड टू नीरज चोपड़ा. देन स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर इन फीमेल कैटेगरी हैज़ बीन अवॉर्डेड टू मीराबाई चानू. देन लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑफ द ईयर अवार्ड हैज़ बीन गिवन टू अजित पाल हु वॉज फॉर्मर हॉकी टीम कैप्टन. देन स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर इन द कैटेगरी टीम स्पोर्ट्स हैज़ बीन अवॉर्डेड टू रुपिंदर पाल. Okay, then Indian women's hockey players were presented the breakthrough performance of the year award. Now who were the jurists? So we can see Sunil Gavaskar, Raghuveer Srinivasan, they were the jurist over here. Then the best PSU for promotion of sports award was awarded to Indian Oil Corporation. Then Haryana was awarded the best state for the promotion of sports. Then Indian women's hockey team goalkeeper Savita Punia, she won the Sportsman of the Year in the Team Sports Award. Now friends, this is the infographic. यहाँ के जो data हैं बहुत ही important है. So see the pandemic, the data is saying that due to pandemic, the transition to digital economy has accelerated. ओके, अगर हम देखेंगे जो कैश का शेयर है एंड व्हेन वी विल कंपेयर इट विद 2019 वी विल सी द शेयर हैज़ हाफ टू 37% इन 2021. अर्लियर इट वाज
70%. सो अर्लियर इन जो ट्रांजैक्शन में जो शेयर था कैश का इट वॉज 70%, नाउ इट इज़ 37%. ओके, नाउ अगर हम ये देखेंगे कि व्हाट इज़ द इम्प्रूवमेंट ऑफ डिजिटल वैलेट, तो पहले ये 5% था एंड नाउ इट हैज़ इम्प्रूव टू 25%. नाउ with India, China is the another country where it has been witnessed the rise in the wallet payment. Now उसके बाद हम देखेंगे कि RBI ने जो एक इंडेक्स इंट्रोड्यूस किया है, डिजिटल पेमेंट इंडेक्स, इट ऑल्सो शोज दैट डिजिटल पेमेंट्स हैव सर्ज्ड इन इंडिया स्पेशली ड्यूरिंग द पैंडमिक. बट अगर हम देखेंगे द contribution of currency in circulation as percentage of GDP, okay, it has now crossed the pre-demonetization level in India and it is highest among the emerging economies. Now friends, today's editorial, the spring blues, a fresh guard is needed to nurture India's fledgling economic recovery. So we are talking here exactly about the economy part. तो अगर हम देखेंगे कि जो अभी जो ग्रोथ रिकवरी है इंडिया का, दैट इज़ फ्रेजाइल. अभी भी हम इसको फ्रेजाइल कहेंगे. क्यों? बिकॉज देयर इज़ टू मैनी डाउनसाइड रिस्क. ओके, देयर इज़ टू मैनी डाउनसाइड रिस्क. नाउ व्हाट आर दिस डाउनसाइड रिस्क? एक तो कोविड-19, द नेक्स्ट इज इंक्रीज इन कमोडिटी प्राइजेस, ओके, एंड देन दिस राइज इन क्रूड ऑयल प्राइसेस. इनकी वजह से क्या हुआ है कि एक बार फिर से जो इन्फ्लेशन है, बोथ CPI and WPI, okay, they have crossed. CPI has crossed 6% and WPI has crossed 13%. उसके बाद अगर हम देखेंगे the level of private final consumption expenditure, so the private final consumption expenditure is still below pre-COVID level. Now how this can be increased? This can be increased if we increase the employment opportunity in India, which is going to increase private consumption. Okay, but because of this inflation figure, RBI may be compelled to follow the tight monetary policy. Okay, if the tight monetary policy is followed, so it is going to lead to squeeze in cash, squeeze in money flow in the country, means increase in interest rates. Okay, so in this increase in interest rate again might hamper the fresh investment in the economy. So friends, that's all for today. We will meet tomorrow again with the daily Hindu analysis. Till then, take care, have a nice day. Thank you.